Okay, today we'll be starting with your pair of lines. Okay, first of all, okay, see, I think first, second, see, miscellaneous exercise 2B. Okay, Sir, eighth one. okay. See, in your eighth question, you are given f of alpha as minus sine alpha 0, sine alpha cos alpha 0, and this is 0, 0, 1. Okay, you need to find inverse of this. Now just listen properly. I'll tell you a direct method to get 3 by 3 ka inverse. Okay, zara complicated hai, zara please listen properly. So f inverse of alpha, ठीक है, is, देखो पहली बात तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो. ओके, so determinant would be like, see, cos theta, cos alpha है, this is cos, तो cos square मिलेगा आपको. It would be indirectly, I think, then afterward plus sine square. Okay, your determinant is nothing but 1 upon cos square alpha plus sine square alpha, I think. तो 1 upon determinant of a लिखो, then listen properly. ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, फॉर एग्जांपल मुझे ये एलिमेंट फाइंड करना है, सो ये टोटल रो और कॉलम निकालो. ओके, मतलब देखो, दिस टोटल रो एंड कॉलम इज एलिमिनेटेड, तो लेफ्ट इज व्हाट, दीज फोर नंबर्स नाउ. तो इनका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, देखो 1 इंटू कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 इज 0, तो यू आर गोइंग टू गेट कॉस अल्फा. सो यहां पे आपका cos अल्फा आता है. ठीक है, देन मैं अभी ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं. ठीक है, सो ये टोटल रो और कॉलम निकाल दो, तो क्या बचा, 1 इंटू कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 इज 0. सो वंस अगेन यू आर गेटिंग, ओके, सो दिस इज कॉस अल्फा. नेक्स्ट मैं अभी ये 1 का एलिमेंट फाइंड करता हूं, तो टोटल रो और ये कॉलम एलिमिनेट करो, तो देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच विल बी 1, मतलब ये एलिमेंट आपका 1 आएगा. आई होप इतना सबको समझ में आया. Yes, sir. ओके, Yes, sir. हैव यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स मैं ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं, जीरो का. जरा इधर चेंज है. ओके, व्हाट यू डू इज, ये जो जीरो है ना, अभी जीरो के लिए डायगोनली ऑपोजिट देखने का, दैट इज दिस एलिमेंट. ओके, तो देखो इसका रो और कॉलम निकाल दो, तो देखो क्या बचता है, 0 माइनस 0 वुड बी 0. ठीक है, सो यहां पे आता है 0. वही मैं ये एलिमेंट की बात करूंगा, तो देखना कहां पे है, यहां पे, तो ये टोटल रो और कॉलम हटा दो, फिर से क्या आता है, 0, तो ये एलिमेंट हो जाएगा तुम्हारा 0. ओके, जरा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. डायगोनली ऑपोजिट देखने का, इसके लिए इसको देखो, इसके लिए इसको. ओके, ये हो गया. देन when I'm talking about this element, ठीक है, सो यू सी डायगोनली ऑपोजिट, मतलब यहां पे देखना है आपको, तो ये टोटल रो
और कॉलम हटा दो तो देखो 1 into minus sin alpha is minus sin alpha, minus 0 into 0 is 0. ओके तो आता क्या है माइनस साइन अल्फा, बट प्लीज रिमेंबर हम लोग लिखेंगे प्लस साइन अल्फा. ओके यू शुड राइट प्लस साइन अल्फा. ओके देन वही जब मैं ये एलिमेंट की बात करूंगा तो डायगोनली ऑपोजिट इधर देखो, तो ये टोटल रो और कॉलम गया, तो ये तुम्हारा साइन अल्फा माइनस 0 विच इज साइन अल्फा नो, तो यू विल गेट माइनस साइन अल्फा. ओके देन जब मैं ये करूंगा तो यहाँ पे देखो ये टोटल रो और कॉलम गया तो इट इज 0 एंड ये भी आपका 0 आता है. सो 1/1 would be 1. Then you can rewrite this for example as cos of minus cos alpha sine of minus sine alpha 0. ये तुम्हारा sine of minus alpha, this is cos alpha 0 0 0 1. So if you observe your f of alpha का inverse is nothing but f of minus alpha. So your option A is the answer. Okay? So last में 1 ना. What? हाँ ये ना 1 है बराबर. Okay, then tell me which question. 8 के बाद में कौन सा क्वेश्चन था? Sir, wait. Well, tell me the question, no, at least. I'm not erasing it. Third question. Huh? Question number 3. Third. That Yes, is third, sir. number 3. Huh? Third MCQ you're talking about, na? Yes, sir. Yeah, okay. Just copy this and tell me. हाँ ये जो भी है ना, ये जो मैंने एरो किया है, ये एलिमेंट्स के लिए तुमको साइन चेंज करना है, याद रखना. प्लस आएगा तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस लिखना होता है. ये जो 4 लिखे मैंने ये. Now is it completed? Yes, sir. Now third question now. See, question number 3 में they've given you matrix A which is 1 2 2 1, and they've told you in your question that A into adjoint of A is nothing but K into R. Now see, we had one formula जो हमने प्रूव भी किया था. A into adjoint of A is nothing but determinant of A. Yeah, I'll even write the whole formula. It was adjoint of A into A is nothing but determinant of A into IN when any order. Okay, so if you compare, I can say K is nothing but determinant of A, which is determinant of 1 2 2 1, which is minus 3. So option D is the answer. Done, sir. Now which question? Yes, sir. Okay, now which question you want me to solve? First. Done, I know. Which question you want me to solve? और है कोई question में? No, sir. Which question? 7. 7. 7th, okay. See, in your 7th question you're given A, which is cos alpha, sin alpha, cos alpha. ठीक है?
आपको A इनवर्स फाइंड करना है, तो सी आई टोल्ड यू लास्ट टाइम योर फॉर्मूला वाज लाइक सी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, देखो cos square alpha minus sin square alpha you're going to have. Okay, this is the determinant of yours. Then इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो वो cos alpha sin alpha, सॉरी cos alpha cos alpha, और इन दोनों का साइन चेंज करो, तो ये तुम्हारा माइनस साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा. Now option is not given to you. One second. तो क्वेश्चन में माइनस साइन अल्फा आएगा ना? क्वेश्चन में माइनस साइन अल्फा है क्या? नहीं. हाँ, बट माइनस लेना होगा तभी होगा, बिकॉज तभी यहाँ पे तो करेक्शन है. करेक्शन है. ओके, सो इफ यू टेकिंग माइनस साइन यहाँ पे, दिस बिकम्स प्लस. ओके, सी जस्ट टेल यू, अगर आप यहाँ पे माइनस साइन लेते हो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है आपका ये प्लस हो जाएगा. अभी यहाँ पे साइन आ गया. ओके, नाउ इन दोनों का साइन आप इंटरचेंज करो, मतलब ये हो जाएगा आपका प्लस साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा. ये तो 1 होता है, तो यू विल बी हैविंग कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. सो आई थिंक ऑप्शन बी इज द आंसर. Okay. Yes, sir. Then which question? First. First. सब करवाओगे क्या मेरे से? अरे फर्स्ट में you have A, which is 1, 2, 3, 4. So what you do? Adjoint of A find करो. मतलब क्या करोगे? इन दोनों को इंटरचेंज 4, 1 और इन दोनों का साइन चेंज -2, -3. बट क्वेश्चन में क्या दिया? एडजॉइंट 4AB -3 कर कंपेयर करो, तो A का वैल्यू -2 है, B का वैल्यू 1 है. फिनिश हो गया. ओके. Yes, sir. Yes, sir. और कौन सा Yes, sir. क्वेश्चन है? सर बस इतना ही. बस करो. सर नया चैप्टर स्टार्ट करो. 10th वाला किया क्या यस सर. सबने? Yes, sir. मैं रोहन की बात नहीं कर रहा हूँ. सब लोग ने किया 10th? Yes, sir किया है. क्या आंसर है? सिमेट्रिक ना? Non-symmetric. नो, इट इज नो सिमेट्रिक. नॉन सिमेट्री. इट इज Non-symmetric. सिमेट्रिक. Non-symmetric. नहीं, सिमेट्रिक आंसर. सर इनवर्स मैट्रिक है ना, तो non-symmetric. हाँ, तो अगर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर, मीनिंग क्या होता है? योर A विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज एज पर योर फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर आप इनवर्स लोगे दोनों तरफ, तो ये तुम्हारा A इनवर्स विल बी A ट्रांसपोज का इनवर्स. तो इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो इट इज लाइक A इनवर्स का ट्रांसपोज. So I can say therefore A inverse is a symmetric matrix. Okay, so option A is the answer. Please remember this. यस सर. Done. Okay, all of you.
यस सर। 12th क्वेश्चन किया था आप लोगों ने यस सर। Yes, सबने? sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. व्हाट वाज द आंसर 12th का? Option D. डी। D, D. ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग दैट पेयर ऑफ लाइंस चैप्टर. ठीक है. आई Yes, थिंक sir. 4 है वहां. 4 pair of lines. Okay. Before starting with the chapter, first of all, we'll revise your 11th standard का जरा जो भी मुझे चाहिए होगा syllabus. ठीक है. See, first is inclination of a line. ठीक है. It is defined as angle made by the line with positive direction of x-axis is called inclination of a line. Okay. For example, this is what is your coordinate axis, and you are having a line which makes an angle of theta with positive direction of x-axis. Then this theta is what is called as inclination of a line. Okay. And it will be positive if measured in anti-clockwise direction, and it will be negative if measured in clockwise direction. Okay, just copy this down. Next is slope of a line. Okay, so your first formula is, first of all, we'll denote your slope as m. First formula is m is nothing but tan theta, where theta is inclination. Second, if your a is, for example, x1 comma y1 and b is x2 comma y2, so slope of AB will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. Next, if equation of line is ax plus by plus c equal to 0, then your slope is given as minus a by b. Okay, then if m1 and m2 are slopes of two lines, then first is m1 will be equal to m2 if lines are parallel. Your m1 into m2 will be minus 1 if lines are perpendicular.
ideally what we'll do is your m2 we will always write as minus 1 upon m1. That is, we'll call this as negative reciprocal. Okay, I want you to remember like this. Okay, then third, इसी में if theta is the angle between, not I'll write rather than theta, I'll say for example alpha. If alpha is the angle between two lines, then your tan alpha will be given as m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Okay, just copy this down. Sir, done. All of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next is what is equation of line. Yeah, I'll say equations of line, under which first is what is your slope point form. Okay, so your slope is denoted as m, and the point is what is x1 comma y1. So your equation is y minus y1 equal to m x minus x2. Second formula is 2-point form. That is, your 2 points are x1 comma y1, x2 comma y2. So just replace this m by its formula. So it would be like y minus y1, m की जगह पे y2 minus y1 upon x2 minus x1, and this is x minus x2. Next is slope intercept form. Okay, so your slope is what is m. Intercept, to be specific, is your y-intercept, which is denoted as c. So your formula is y equal to mx plus c. Okay. Now, if I say if this line is passing through the origin, तो वो केस में ये जो c है ना, उसका वैल्यू 0 हो जाता है. तो ये formula is important with respect to this chapter. Equation of a line passing through the origin and having slope m is y equal to mx. Okay, please remember this properly. Y equal to mx. Okay, please copy this. Then see, general equation of a straight line is, see, it is ax plus by plus c equal to 0. ठीक है ना? This is a linear equation. वही अगर मैं बोलूंगा general equation of a straight line
passing through the origin. Now since it is passing through the origin, ये तुम्हारा c जो है ना, it becomes 0. So it will be ax plus by equal to 0. Okay, just copy this down. Sir, done. हो गया ना लिख के, I think. Done, sir. Yes, sir. Sir. Something called as perpendicular distance formula. It states, see, we're having a point which is x1 comma y1 and there is a line. The equation is ax plus by plus c equal to 0. And we want to find this length pq. Okay, so your length pq will be given as ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. Just even note down this formula for your slopes. Okay. See, your m1 minus m2 the whole square can be written as m1 plus m2 the whole square minus 4 m1 m2. Just note this formula. It will be helpful in your exercise. And even one theorem. You have your theorem, that is your theorem number 4.1. Okay, it states the equation uv equal to 0 represents the combined equation of lines u equal to 0 and v equal to 0. This is a statement given to you. Okay, so your proof will say let u equal to is nothing but a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and v is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Okay, now I'll say let p x1 comma y1 be the point on the line u equal to 0. Okay, so we'll say therefore substitute x equal to x1 and y equal to y1 in u equal to 0 matlab ye one. We'll be having the equation like a1 x1 plus b1 y1 plus c1 का value is what is 0 I am getting. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि we need to prove कि uv equal to 0 represents the combined equation of these two lines. Okay, so now we'll check whether ये satisfy होगा कि नहीं. Next we'll say to show that x1 comma y1 satisfies uv equal to 0. Okay, now you take the LHS which is uv बराबर. अभी देखिए u क्या है आपका एक्चुअली a1 x1 plus b1 y1 plus c1 and v was a2x plus b2y plus c2.
ओके सो इसका वैल्यू क्या है, 0 है ना आपके पास, तो इट इज 0 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 which is nothing but 0 which is your RHS. So we'll say therefore px1 comma y1 satisfies the equation uv equal to 0. ठीक है, इतना कॉपी कीजिए, which we need to prove. So we were able to prove कि x1 y1 satisfy the equation uv equal to 0. So I can say this proves that every point on the line u equal to 0 satisfy the equation uv equal to 0. So I can say similarly we can prove that every point on line v equal to 0 satisfy the equation uv equal to 0. Okay, now इसका रिवर्स करते हैं हम लोग. I'll say for example let x dash comma y dash lies on the lines given by equation uv equal to 0. Okay, so it will be like a1 x dash b1 y dash plus c, a2 x dash b2 y dash plus c equal to 0. That is your a1 x dash plus b1 y dash plus c will be 0 and a2 x dash b2 y dash plus c would be 0. Okay, so I can say therefore your r x dash comma y dash lies on the line u equal to 0 or v equal to 0. ठीक है, so indirectly we can say जो भी आपने प्रूव किया है दोनों केसेस, okay, we will say every point which satisfy the equation uv equal to 0 lies on the line u equal to 0 or the line v equal to 0. Therefore equation uv equal to 0 represents the combined equation of lines u equal to 0 and v equal to 0. Okay, please copy it down. Done, sir. All of you.
Yes. Yes, sir. Enjoy. Huh? Your lecture is over now. In total in this chapter you have 4 theorems. और एक थ्योरम पक्का एग्जाम में आता है, ठीक है? तो ये आज ये किया है हमने, तो ये बाहर कर लेना प्रॉपर्ली, ठीक है? चलो, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. नो होमवर्क, एंजॉय, ठीक है?